Hi, this is Ashwini, and in today's video, in the series of Write Life My Way, we are going to discuss editing and revising. What happens when you finish writing a story? What do you do when you finish writing your whole story? Well, you reread it again and redo it. Now you can put it to the side for a couple of months and then read it again. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन और री एडिटिंग की स्टोरी को कैसे संपादित करना है, फिर से एक बार लिखना है, फिर से एक बार पढ़ना है कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है उसमें। तो आप लिख के 2-3 महीने के लिए साइड पे रख सकते हो आपकी पूरी स्क्रिप्ट, या आप फिर से एक बार पढ़ोगे और रिवाइज करोगे और उसके बाद साइड पे रखोगे और फिर से एक बार उसको रिवाइज करोगे। Whatever you have written in the zero draft, you have to first look at the plot. Are there any problems in the plot? And how you are going to undo the problems which are there. Link things together. Maybe something you started off in the beginning, you find out that towards the end something has changed in the story and you must then put it together again. Okay, so you have to see if there are any plot holes, or if you have written things, for example, you have said that the character has blue in the story, so you can make those changes now, nobody will know about it. Alright, so you look at the plot, then plot holes. Then if you need to do a little bit of research about certain things, then you research a certain topic and rewrite that part which you feel is lacking in your description. Supposing you write about a certain technology in space, and it is a known technology that you write about. If it's a fantasy technology, then you don't need to do research. But if it's a known technology, then you have to make sure that it is at least a little understandable. Then you have to think about the character. How is your character? How are the characters moving along? Are they true to their nature and their personalities? Are they doing what they should be doing? Are they introverted? So is that still being seen perhaps in the story, and how they change? They become suddenly extroverted. Is that being seen or not? Alright, so you have to see the characters as well. How are they growing? Then you have to see your descriptions. How have you described? Can you use better words to describe a certain place or a person or an event? Then you do those changes inside it. Do you want to change certain names of certain persons and places and things? You make those changes. Then you see what kind of dialogue is there, and for that you can read out your manuscript and see if the dialogue is making sense. If it's not making sense, if you have put in too many typical words which are always used, or cliched dialogues, then you can remove them and refine them. Also, you can do a grammar check, and then also remove certain words like also, which I'm saying, which keep on coming up, and ing words, ly words, almost, suddenly, all of a sudden, just when, and that are some words which you can remove from the manuscript. And it's alright to remove up to 15 to 20,000 words or even sequences or events from a story, because it makes the story better and faster. And it also makes the story better paced, perhaps, if the descriptions are becoming too long. तो आपने 5-6 चीज़ें याद रखनी है जब आप रिवीजन करते हो, फिर से एक बार पढ़ते हो और फिर से एक बार लिखते हो, कि आपका जो प्लॉट है, जो फ्रेमवर्क है, जो योजना है, वो सही चल रही है नहीं, या इसमें कोई मिस्टेक है, कि आपने पहले जो लिखा है उससे कुछ और ही हो गया, तो वो लिंक नहीं जुड़ रही है, तो वो चेंजेस आपने करने हैं। शायद आपने कुछ कैरेक्टर के बारे में लिखा हो कि इस कैरेक्टर की आंखें नीले हैं, और बाद में आप लिखते हो कि इस कैरेक्टर की आंखें ब्राउन है, चॉकलेट कलर के हैं, तो फिर आपने वो चेंज करना है। और जो भी आपने रिसर्च करनी है और इन्फॉर्मेशन डालनी है
अगर आपका नायक उसमें से कोई भी एक नायक कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर की लैंग्वेज कैसे बात करते हैं, ज़रा आपको और रिसर्च करना हो या कुछ चीज़ जो दुनिया में है जो पता है लोगों को उसके बारे में और ठीक से लिखना हो तो आपने उसे और ठीक से लिखनी है और रिसर्च करना है उसके ऊपर कि आप सही लिख रहे हो उसके बारे में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप मछुआरे के बारे में लिख रहे हो तो शायद आपने और उसके बारे में पढ़ना होगा कि कैसे फिशिंग होती है, कैसे मछुआरे रहते हैं और वो ऐड करना है आपको। फिर प्लॉट के बाद आपने कैरेक्टर अपने नायक के बारे में सोचना है कि आपने जो लिखा है वो कैरेक्टर के साथ चल रहा है या नहीं। फिर डायलॉग देखना है कि क्या आप एकदम फिल्मी डायलॉग लिखे हैं जो कोई फिल्म स्टार ने बोले हुए तो आपने उसको चेंज करना है और कैरेक्टर के हिसाब से वो डायलॉग चल रहे हैं या नहीं ये भी आपने निकाल लेने हैं। 20,000 से 15,000 शब्द आप आसानी से निकाल सकते हो। यू कैन रिमूव ऑल दोस थिंग्स। फिर आपके जो वर्णन होता है सब चीज़ों के, घर के या माहौल के, जो आपने मूड बनाया है तो आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखा हो वो आपको ही पता चलेगा जब आप फिर से एक बार पढ़ते हो स्टोरी कि ये बोरिंग चल रहा है या इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर आपको ही आपने जो स्टोरी लिखी हुई बोरिंग लग रही है तो रीडर को भी वो बोरिंग लगेगी स्टोरी। तो आपने ये फालतू के शब्द और फालतू के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो निकाल देने हैं। सो यू हैव टू रिमूव वर्ड्स, इवेंट्स, maybe characters which are not necessary. Sometimes you can merge two characters together which helps the story forward. तो कभी कभार आपने दो नायक, अगर बहुत ज़्यादा नायक हो गए तो दो नायक एक साथ एक ही कर देते हैं, दे सकते हो आप। फिर से एक बार लिखना है और फिर आपने ये किताब आपकी जो स्टोरी है साइड पर रखनी 2-3 महीने के लिए। सो आफ्टर यू ड्राफ्ट यू एंड रीड्राफ्ट एंड री-एडिट, you leave the story to the side and write another story or do something different or travel the world, whatever you want to do for 2 to 3 months, right? So you do that and then then you go back to it again. You'll have a general idea of how long is the book. Is it 50,000 words? Is the story 90,000 words? Is it 100,000 words? Then you might want to cut down on some of the words if it's too long. So you have to do a take on that. So you should keep the book is going to be. So if you are falling below coming to 45,000, 50 to 60,000 is a good range for a book which is for children generally, and up to 90,000 and upwards is for adult books. But if you are a new author, then 80,000 is a good target because the publisher will not publish a long book because he's taking a risk on you. तो आप 2-3 बार फिर से एक बार पढ़ के, फिर से एक बार लिख के, चेंजेस करके आप ट्रांजिशंस डाल सकते हो, क्लिफ हैंगर्स डाल सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज डाल सकते हो हर चैप्टर के बाद। तो आपको आपके शब्द बढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी लंबी ये कहानी है, 50,000 की है या 90,000 की है। 90,000 से ज़्यादा शब्द हो गए तो शायद अगर आप फर्स्ट टाइम ऑथर हो, राइटर हो, तो शायद एडिटर आपकी बुक को बोलेगा कि कम कर दीजिए वर्ड्स थोड़ा सा, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है आपके ऊपर। बड़े बड़े ऑथर्स और ज़्यादा शब्द लिखते हैं, उनको अलाउड होता है। सो जब स्टोरी 50,000, 50,000, 60,000 तक होती है तो जनरली छोटे लोगों के लिए या टीनेजर्स के लिए होती है जनरली, लेकिन स्टोरी होती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। 90,000 तक से कम होगी तो अच्छा होगा, 80,000 रखोगे तो और अच्छा होगा। शब्द मैं बोल रही हूँ। तो सी हाउ मेनी वर्ड्स यू आर गोइंग टू हैव और and see how much you are going to cut. You can cut as much as you want. So revise, leave the book for 2-3 months and come back to it again and you keep on doing it. Okay, so एक स्टोरी लिखने के लिए आपको 3 महीने तकरीबन लग जाएंगे, शायद थोड़ा सा और भी लगेगा,
लेकिन अपने 2-3 महीने उसको साइड पे रखना है और फिर से एक बार उसको लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है। और ये सिस्टम लिखना, पढ़ना, रिवीजन और साइड पे रखना किताब को आपने 6 या 7 से ज़्यादा टाइम्स करना है। ओके, तो धीरे धीरे आपकी स्टोरी ये अच्छी और अच्छी होगी। जितना डिलीट करोगे यूजलेस शब्द उतना ही अच्छा होगा। तो जितनी आप उसको फिर से एक और बार देखोगे, फिर से एक बार आप पढ़ोगे जोर से, पढ़ो, लिटरली पढ़ो जोर से, जैसे आप स्टोरी बच्चों को बताते हो, तो आपको पता चलेगा कि क्या इसमें मिस्टेक्स हैं। सो कीप ऑन डूइंग द सिस्टम ऑफ रिविजन एंड री एडिटिंग, कीपिंग द बुक aside, story aside for 2-3 months and then redoing it for at least 5 to 6 times. What do I do? Well, first of all, I do a zero draft and then I do a first draft and second draft and then I keep the book to the side. Okay, this I generally take around 3 to 4 months to write a book or a story, and then another month to redraft from zero draft to first draft to second draft, third draft. I redo it and keep it to the side for about 3 to 4 months, and I start doing something else, working on something else, and then I see it once again, and then the same process I do. And at each revision, I go for a different, I focus on a different thing, okay? Plus also do the 5 or 6 things I told in this video. So if I'm doing plot, if I'm revising it for the first time, after my first, second and zero, first and second draft, and to the side, the second time round, I look at the plot mainly. I focus on the plot and also look at the dialogue a little bit and descriptions. Okay, and I also start reading out the book a little bit. Then the second time, then I again keep it to the side. It takes about a month or so, or 15 days, 20 days, depending on how long is the book and how much time I get. Then once again, from the plot, once I'm satisfied in my last revision about the plot, I go to the dialogue, focusing on dialogues. And also then looking at the plot, etc., and descriptions and transitions, how smoothly they are, is there a cliffhanger? Then cliffhangers and transitions, no transitions, I add it at the 7th or the 8th revision that I do. Okay, so for each revision that I do, I focus on one point and also look at the other points. And in the last part, before I send it out to anybody, I read it out aloud. And once I'm happy with the reading out, then I send it to beta read and give it to other people to have view on it. And then I revise on what they have told me, and then I revise it once more and then I send it for query. तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर टाइम ये मेथड फॉलो करती हूँ कि मेरा ज़ीरो ड्राफ्ट, आउटलाइन के बाद जो ड्राफ्ट होता है वो, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट, ज़ीरो ड्राफ्ट के बाद सेकंड ड्राफ्ट, वो होने के बाद मैं बुक साइड पे रखती हूँ। तो हर ड्राफ्ट में ऑफकोर्स मैं रिविजन करती हूँ जो मैंने पॉइंट्स पहले बताए थे। तो मैं 3 महीने साइड पे रखती हूँ उस बुक को, कोई और स्टोरी लिखती हूँ, कुछ और करती हूँ, या हम छुट्टी पे जाते हैं, फिर से एक बार उस स्टोरी को खोलती हूँ, फिर एक पॉइंट लेती हूँ रिविजन का, जैसे प्लॉट, और बाकी के पॉइंट को थोड़ा सा ही देखती हूँ। जैसे सेकेंड रिविजन जो होती है, मैं प्लॉट को देखती हूँ और डायलॉग भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखती हूँ, फिर बुक साइड पे रखती हूँ, अगर फिर से 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और ये रिवीजन जो होती है 1 महीना 15 दिन लगते हैं, कितनी बड़ी बुक होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फिर से मैं प्लॉट हो गया पहली दफ़ा, तो मैं फिर डायलॉग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, फिर उसको देखती हूँ कि मैंने कैसे अच्छे लिखे हैं। प्लॉट भी फिर कंप्लीट होता है पहले रिविजन्स में, डिस्क्रिप्शन डायलॉग भी हुई हैं, ठीक से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो इस बार मैं डिस्क्रिप्शंस ठीक से देती हूँ और अच्छा कैसे हो मैं लिख पाऊंगी, ठीक है, तो वो चेंज करती हूँ।
और ये चलते। तो उसके बाद मैं किसी को देने से पहले एक और कोई और पढ़ने से पहले मैं उसको फिर से एक बार जोर से पढ़ती हूँ, और जैसे कोई बच्चे को सिखाते हैं वैसे मैं पढ़ती हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो फिर मैं किसी और को, जो बेटा रीडर पढ़ते हैं स्टोरीज और उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, उनको दे देती हूँ। तो वो 1-2 और महीने लग जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा और विचार करके वो लिखते रहेंगे नोट्स। तो उसको मैं चेंज करती हूँ, उनका देखती हूँ उन्होंने क्या लिखा है, ओपिनियन उन्होंने क्या बताया है, स्टोरी में क्या चेंजेस चाहिए और उनको क्या अच्छा लगा है क्या नहीं। तो मैं उनके ओपिनियन से सहमत होती हूँ तो मैं उसमें ऐड करती हूँ चीज़ें या निकाल देती हूँ, और फिर एक बार और रिवाइज करती हूँ उसको, स्क्रिप्ट को। और फिर उसके बाद में शायद एक लेटर लिख के, सिनॉप्सिस लिख के, छोटा सा पैराग्राफ उसके बारे में लिख के मैं कोई पब्लिशिंग कंपनी को भेज। Once you revise, read it and submit it to an editor, and if you get a call for a full manuscript, then the editor will make changes, and again the process of changes and re-editing will take place. Okay? तो अगर आप खुशनसीब हो, आपकी बुक कोई एडिटर को अच्छी लगी, तो वो एडिटर बोलेंगे पूरी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, और फिर जो एडिटर होंगे वो भी उनके एडिटिंग रिविजन्स कर देंगे। उनका काम ही है उसको चेंज करना, और फिर आपने उनके हिसाब से चेंजेस करने हैं, और इधर भी 6 से 7 से 10 चेंजेस हो सकते हैं। तो बुक ऐसे बनती है, स्टोरी ऐसे हो जाती है, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 1 या 2 साल लग जाते हैं। अगर आप कोई कंपनी को दोगे आपकी स्क्रिप्ट, अगर आप खुद पब्लिश करोगे तो अमेज़न में 2 सेकंड में पब्लिश हो जाएगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हाउ अ बुक इज मेड, फ्रॉम एन आइडिया टू the full concept and the full script being written and being submitted, being accepted, and then hopefully being published and marketed. Okay, so this is the end of Write Life My Way, basics of writing, and this will be the last video, and maybe I will come up with a different topics by next month perhaps, and I will perhaps, if you guys want, do an advanced Write Life My Way series some other time, probably next year. Right? See you. Bye bye. Thank you for watching.